Hello dear students, we have started with bacteriological standards for potability of water, and two standards are being designed. First is Bureau of Indian Standards that already we have discussed in our last video lecture, and in this lecture we are going to discuss about the second organization, that is World Health Organization, which is also known as WHO. World Health Organization play keen role in various health conditions related or organized at the world level. So the logo for this is like a snake दिखाया गया है, and ring like structure has been there. So this is the logo for World Health Organization. It was established in the year 1948, 7th April 1948. Attainment of highest possible level of health, then it is the state of all complete physical, mental, social well-being. तो ये सब कुछ रेगुलेट करता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशल well-being of human beings. Total 194 members are there, and the meeting of WHO is held every year in the month May in Switzerland city Geneva. तो इसकी मीटिंग हर साल मई मंथ में होती है स्विट्जरलैंड में, एंड द सिटी इज जेनेवा. इसका मेन टास्क क्या होता है, इसका काम क्या है? इट अप्रूव WHO प्रोग्राम एंड बजट फॉर द सेम एंड टू डिसाइड मेजर पॉलिसी क्वेश्चंस. तो इसका मेन काम होता है WHO प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना एट इंटरनेशनल लेवल, एंड बजट फॉर दैट प्रोग्राम, as well as to discuss the major questions related to the health affairs जो international level पे discuss होते हैं, major health issues. And the executive board consists of 32 members. ये 3-year term program है, so that is 32 members overall इस executive board में है. Now what are the we can say standards or criteria for the water level which is associated with BIS also. तो कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से BIS के गाइडलाइंस हैं जो अल्टीमेटली अफेक्ट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे. सी, व्हेन यू ड्रिंक सेफ वाटर, व्हेन यू ईट healthy food, and when you maintain hygienic condition, that time there is no need to go to doctor, or there is no need, or there is no any we can say condition you can feel ill or you can get infected. So World Health Organization ये कुछ schemes employ करता है जिस वजह से इंसान ये healthy रहे, फिट एंड फाइन रहे. तो ये सब शुरुआत होती है पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन से. क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं, कितना सेफ पी रहे हैं, तो इन सब पर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्थ पर अफेक्ट करती हैं, एंड एट मैक्सिमम लेवल इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. सो कुछ BIS ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि वाटर कैसे होना चाहिए, किस हद तक ये होना चाहिए फॉर द सेफ्टी, सो दैट यू कैन कंज्यूम दैट वाटर. सो व्हाट आर द जनरल पैरामीटर्स दैट आर डिस्कस्ड इन दिस टेबल. सो पैरामीटर लाइक फर्स्ट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये कितना होना चाहिए, 2000 मिलीग्राम पर लीटर. एंड व्हाट आर दी हेल्थ इफेक्ट्स, अगर ये ज़्यादा होता है तो हेल्थ इफेक्ट क्या है, अनडिजायरेबल टेस्ट हो जाती है, यानी कि सॉल्टी टेस्ट हो जाएगी, ओके, एंड इट मे लीड टू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स इफ टोटल सॉलिड्स आर मोर देन 2000.
मिलीग्राम पर लीटर. पीएच इट मस्ट बी बिटवीन 6.5 to 8.5. अगर ज़्यादा या कम हो जाता है इस रेंज से तो इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट चेंजेस द टेस्ट ऑफ द वाटर, इट अफेक्ट्स द टेक्सचर ऑफ द वाटर. सो ये सब हो सकता है. नेक्स्ट इज अल्कलाइनिटी. अल्कलाइनिटी ये कितनी होनी चाहिए? 600 मिलीग्राम पर लीटर. अगर उससे ज़्यादा है तो हाउ द बॉइल्ड राइस, इट मे टर्न द बॉइल्ड राइस इनटू येलोइश कलर. जो बॉइल्ड राइस है, वाइट राइस, ओके, उसका कलर ही डायरेक्टली चेंज हो सकता है. इट मे कन्वर्ट इनटू येलोइश कलर इफ alkalinity is decreased beyond or decreased above 600 milligram per liter. Hardness it must be 600 milligram per liter. What will be the effect? Poor lathering with soap. Poor lathering means what? Foam like structure होगा, मतलब सरफेस जैसे साबन के कैसे सरफेस हो जाते हैं, सेम लाइक फोम अपीयरेंस हो सकता है. अगर वाटर की हार्डनेस ये ज़्यादा हो 600 मिलीग्राम पर लीटर तो वाटर ये डिटर्जेंट जैसे फोम फॉर्म करने लगेगा. ओके, एंड डेफिनेटली दैट वाटर इज़ नॉट एट ऑल सेफ टू यूज़. नेक्स्ट इज कैल्शियम. कैल्शियम लेवल ऑल्सो इट मस्ट बी 200 मिलीग्राम पर लीटर. सो 200. व्हाट विल बी कंडीशन अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए? It may lead to the poor lathering and deterioration of the quality of clothes. Okay, यूज़ करने के लिए ये सेफ नहीं है. एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम लेवल इट मस्ट बी 100. सेम है इफेक्ट इन अब तक के ये जो जितने भी इफेक्ट है. पुअर लैदरिंग. लैदरिंग मीन्स व्हाट? कवर अप और फोम ऑफ क्लोथ्स विथ सल्फेट laxative. Laxative means these are the substances that stimulate the bowel movement. Okay, और इट में अगर ये ऐसा वाटर हम कंज्यूम करते हैं बाय चांस, इफ वी ड्रिंक दैट वाटर देन डेफिनेटली इट मे लीड टू द डिसेंट्री डायरियल disease. It is not at all safe to drink if the magnesium or calcium or iron level is above this normal range. Iron 1.0, and when it will be above, same it may change the taste, color and turbidity may form, and even it is not safe to use. Manganese the level must be 0.3. if it is more it may change the color, taste and it may lead to the turbidity and may form the slimy layer onto the water surface. Next are chemical. Next parameters are some metals are there like aluminum, copper, zinc, ammonium, nitrate, sulfate, chloride and fluoride. तो इनकी रेंज दी गई है अकॉर्डिंग टू BIS. Aluminum must not be more than 0.2 milligram per liter. Unit are same, milligram per liter. If it is more, it may lead to the neurological disorders. तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है रिलेटेड टू द ब्रेन. अल्जाइमर डिसीज हो सकता है जहाँ पर पर्सन ये बार बार भूलने लगता है. ओके, सो दैट इज अल्जाइमर डिसीज. कॉपर लेवल. सो कॉपर लेवल इट मस्ट बी 1.5. if it is more it may lead to the liver damage, mucosal irritation, renal damage related to the kidney disease or depression. Okay, so these are the general health hazards. if zinc की level है 15, if it is more than 15 then there is astringent test, मतलब एक झंझनाहट जैसी उसकी टेस्ट आने लगती है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया एंड डिजीनेस, मतलब अजीब सा फील हो सकता है. ओके, अगर वाटर में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन ये 15 से ज़्यादा है, 15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, देन पर्सन में सफ़र फ्रॉम दिस कंडीशंस. अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट डिसाइडेड, अमोनिया एंड नाइट्राइट, बट अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर ये वाटर में प्रेजेंट होते, इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन वाटर.
अमोनिया और नाइट्राइट ये जनरली वाटर में प्रेजेंट नहीं चाहिए. अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट्स दैट वाटर इज पोल्यूटेड एंड देयर इज ग्रोथ ऑफ algae. So ammonia or nitrite का concentration it must be null, it must be nil, it must be zero. Okay, if it is present then it indicates that water is completely polluted and there is growth of algae and it forms nitrosamines which are carcinogenic to health. It may lead to the cancer. Then next is nitrate it must be 100 milligram per liter. If it is more it may cause the disease known as blue baby disease, which is also known as methemoglobinemia. Now what is blue baby disease? It is the disease which occurs in the infants. यहाँ पर बेबी की स्किन ब्लू हो जाती है. ओके, नॉर्मल स्किन कलर के जगह बेबी की स्किन ब्लू हो जाती है. इसे इन्फेंट मिथेमोग्लोबिनिया भी बोलते हैं. दैट इज मिथेमोग्लोबिनिया मतलब प्रेजेंस ऑफ मिथ हीमोग्लोबिन. ओके, प्रेजेंस ऑफ मिथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. मिथ हीमोग्लोबिन मीन्स hemoglobin which show absence of oxygen. Okay, for it is a form of hemoglobin that cannot carry oxygen. Okay, oxygen carry नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं मिथ हीमोग्लोबिन. So baby blue baby disease means in this skin appears blue in color. So अगर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ये 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो then this condition may happen. Sulfate concentration 400 milligram per liter. If it is more it can affect the test and it may lead to the gastrointestinal disease. Chloride का concentration it must be 1000 milligram per liter and if it is more it can affect the test and it may lead to the corrosiveness. Fluoride concentration 1.5 milligram per liter. If it is more or less it may cause dental and skeleton disease or skeleton fluorosis. Next parameter phosphate. It must be absent in the water. If it is present then it indicates that water consists of the algae and it is not at all safe to use. Next is arsenic. आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही नल अमाउंट में है, दैट इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर. इफ इट इज मोर इट इज टॉक्सिक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इवन इट इज कार्सिनोजेनिक. ओके, सो नेक्स्ट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, यानी कि डायरेक्टली नहीं भी हुआ तो भी चलेगा. 0.001. इफ इट इज प्रेजेंट in high amount it is very toxic and it causes the disease known as Minamata. Okay, Minamata it is the neurological disease caused by the presence of mercury. Okay, so ये neurological disease है, mercury के वजह से होता है. Okay, and it also may lead to the kidney diseases, renal disturbances and it may cause the mutation. Next is cadmium. Cadmium 0.01. If it is present in large amount it is toxic and it causes इटाई disease, painful rheumatic condition. तो इटाई disease क्या है? It is the rheumatic condition and this is the condition in which people suffer from the pain of spine and joints. Okay, so rheumatic condition है. Again it may lead to the cardiovascular system, gastrointestinal system and may cause hypertension. Lead का concentration 0.05. If it is more it can cause tiredness, plumbism. Plumbism का meaning होता है tiredness. Then lassitudes. Okay, so plumbism it is the, ये इसका मतलब होता है lead in the body. Okay, concentration of lead in the body which may cause the tiredness. Okay, lassitudes means lack of energy, बहुत ही low feel होता है. Abdominal discomfort, like this condition person can observe if the lead concentration is more and if he consumes that
वाटर. नेक्स्ट इज क्रोमियम. क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 0.05. if it is more, it is carcinogenic and it may cause ulcers and respiratory problems and even some skin complaints. Pesticides, वाटर में तो पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं चाहिए. इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ टू यूज, बट इफ इट इज़ देयर it must be present in very low concentration, same like that of the mercury, 0.001 milligram per liter. If it is more than that, then it affects the central nervous system, brain disorder. And detergent तो बिल्कुल भी present नहीं होना चाहिए. It may lead to the foaming, okay, surface like appearance. So this is all about the health effects of chemical parameters. Next, कुछ programs है for safe water like National Drinking Water Mission, which was introduced in the year 1986 and it is renamed as Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission in 1991. वही प्रोग्राम को रीनेम किया गया बाय राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन इन द ईयर 1991. Next is Accelerated Urban Water Supply Program. It was initiated between the year 93 to 94. Next program is National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program. It was launched in the year 2006. उसके बाद है भारत निर्माण. It is established for rural drinking water in 6 components. Okay, is one of the 6 components. So Bharat Nirman, especially for rural drinking water. National Urban Renewal Mission to provide infrastructure facilities including water supply. तो ये कुछ प्रोग्राम्स है फॉर सेफ वाटर, घर घर सेफ वाटर पहुंचना चाहिए. तो सेफ वाटर हम कब कहेंगे? when our water fulfills this all the conditions, all the parameters, then and then only water is safe to drink and safe to use. I hope you might have understood this lecture. If you have any doubt regarding this lecture, you can ask me in comment section. Thank you.